Constituent Assembly. Constituent Assembly is a temporary body to frame Constitution of India. Constituent Assembly एक temporary body है जो Constitution को बनाने के लिए बनाई गई थी. It is a temporary body. To frame Constitution of India. It was formed in November 1946. इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को. उसी दिन टेम्पररी प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे. Whose name was Dr. Sachidanand Sinha. On 11th December 1946, permanent president was elected. Whose name was Dr. Rajendra Prasad. And vice president was H.C. Mukherjee. यहाँ पे नोट करने वाली एक चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डायरेक्टली यूपीएल के द्वारा इलेक्ट नहीं की गई थी. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was not directly elected by people. All the most prominent leaders were the part of Constituent Assembly, but Mahatma Gandhi and Muhammad Ali Jinnah was not the part of Constituent Assembly. All prominent leaders were the part of Constituent Assembly. Except दो को छोड़ के, except महात्मा गांधी and मोहम्मद अली जिन्ना. इन दो को छोड़ के बाकी सभी प्रोमिनेंट लीडर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट थे. अब हाउ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड, ये क्वेश्चन है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ. तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was given by M.N.Roy in 1934. जो आइडिया था, that idea was given by M.N.Roy. M.N.Roy in 1934.
इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड करी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड करी इन 1935। अगेन जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड करी ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगेन डिमांडेड बाय J.L. Nehru in 1938। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड करी, बट जवाहरलाल नेहरू वांटेड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मस्ट बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। J.L. Nehru wanted Constituent Assembly must be elected on the basis of adult franchise। All these three demands were accepted by the British government। Accepted by the British government। In 1940 अगस्त ऑफर अब डिमांड एक्सेप्ट हो गई। इसके लिए इन 1942 सर स्टैफोर्ड क्रिप्स केम टू इंडिया विद हिज क्रिप्स प्रपोजल टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टैफोर्ड क्रिप्स इंडिया आए और एक क्रिप्स प्रपोजल लेकर आए जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके। इन 1942 सर स्टैफोर्ड क्रिप्स came to India with his proposal to frame Constitution of India। अब क्रिप्स प्रपोजल जब इंडिया आए तो मुस्लिम लीग ने उनको रिजेक्ट कर दिया, उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि 2 सेपरेट स्टेट बने और 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने। क्रिप्स प्रपोजल was rejected by Muslim League। Because they wanted 2 separate states। Two separate states। States and 2 constituent assemblies।
Finally, cabinet mission came to India and they rejected this demand of two constituent assemblies. Also, they satisfied Muslim League, hence the Constituent Assembly was formed in November 1946. Cabinet mission came to India. They rejected the demand of Muslim League, but also satisfied them. Hence, Constituent Assembly was formed in November 1946 under cabinet mission. According to cabinet mission, there were only 389 seats. 389 सीट्स में से 296 सीट्स तो इंडियन प्रोविंसेस को दे दी गई और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को. अब प्रिंसली स्टेट्स क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो उनकी सीट्स तो वैकेंट रह गई. केवल 296 सीट्स पे इलेक्शन हुआ है. अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन, there were 389 seats, out of which 296 was given to British Indian provinces. And 93 seats was given to princely states. अब इसमें सब princely states तो इंटरेस्टेड थे ही नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो ये सीट्स तो पूरी वैकेंट रह गई. इन 296 सीट्स इलेक्शन होना था. अब ये इलेक्शन हुआ जुलाई अगस्त 1946 में. तो रिजल्ट जब आया तो उसमें से 208 सीट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास आई, 73 सीट्स मुस्लिम लीग के पास आई, और 15 सीट अदर्स पे. तो अल्टीमेटली 296 सीट से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई.